हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। हमने अपने लास्ट वीडियो में न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ा था, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन until and unless an external force is applied to it। तो इन कॉन्टिन्यूएशन बच्चे हम लोग आज न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने मोमेंटम के बारे में भी सीखा था। You know that momentum is the quantity of motion in a body. It is the measure of the quantity of motion and it is calculated by the product of mass and velocity। तो उसके कॉन्टिन्यूटी में बच्चे आज हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, the rate of change of momentum of a body, it is directly proportional to the applied force and it takes place in the direction of the force। तो यहाँ देखिए, I have made a vehicle। ये व्हीकल है, इसका मास m है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। इस व्हीकल के ऊपर हमने एक फोर्स F लगाया है फॉर टाइम t, जिसकी वजह से ये जो व्हीकल जिसका मास m है, it had started moving with a velocity v। So you have to remember that the force has been applied for time t। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसके इनिशियल मोमेंटम को। So what is the initial momentum P1? Can you tell me? Yes, it will be mass of the vehicle, which is m, into what is the initial velocity? The initial velocity is u. So it is m into u, right? So the P1 is m into u. So that is the initial momentum of the vehicle। जब हमने फोर्स F लगाया फॉर टाइम t, so what is the final momentum? The final momentum is P2। It is again mass into final velocity, which is m into v, right? Now we can calculate change in momentum। The change in momentum will be P2 minus P1। What is the value of P2? It is m into v, and what is the value of P1? It is m into u। So it is mv minus mu। What we are going to do now? We are going to take n common, so it is m, and bracket, we have put a bracket, v minus u is inside the bracket। So this is the change, change in momentum। And guys, we have to calculate the rate of change of momentum। So जब भी हमें रेट कैलकुलेट करना होता है बच्चों, तो हम उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं। तो आइए हम इसको टाइम से डिवाइड करते हैं। So the rate of change of momentum will be m v minus u upon t, right? Now what is according to Newton's second law? Newton's second law क्या कहता है बच्चे? वो कहता है कि the applied force, it is proportional to the rate of change of momentum। So F is directly proportional to m v minus u upon t। So F is proportional to, we have taken m as common already, और अभी हमने इसको v minus q by t को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। और इसको आपने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन में, आपने पढ़ा था that v minus q upon t is what? It is acceleration। It is the rate of change of velocity, which is known as acceleration। So F is proportional to m into a। Now in SI units, now we have to remove this sign of proportionality। तो जब भी हम लोग proportionality का साइन हटाते हैं, तो we have to put a constant। तो हमने यहाँ पे constant बनाया बच्चे Q। तो F is it is proportional to, जब हम इसको हटाएंगे, we put a equal to sign। And that in SI units में the value of K is 1। तो K की वैल्यू को हमने 1 पुट कर दिया यहाँ पे। So F is 1 into m into a। So now what is the value of force? The value of force is F is equal to m into a। So this is how we have calculated the force by Newton's second law of motion। Now what is the unit of force? The unit of force is Newton, and it is denoted by the symbol capital N, right? तो अभी हम जानना चाहेंगे कि जो 1 न्यूटन है उसकी वैल्यू कितनी होती है, राइट? So अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F is equal to m into a, force is equal to mass into acceleration। Now if I put the value of mass as 1 kg
an acceleration as 1 meter per second square. So what is the force? The force will be 1 Newton and is equal to how much? 1 kg meter per second square. So I hope you have understood the Newton's second law of motion. In our next videos, we will take about the Newton's third law of motion. तो guys, सीखते रहिए, जीतते रहिए, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे।